A family of 4 spent 2 months in the dark earlier this year in the small portion they rented. A husband, wife and 2 children in Islamabad spent these 2 months without electricity because their bill had been so high they could not afford to pay it, so they simply plodded on without any electricity. The neighbors then got together to pool money and pay the bill to help them out. One can only wonder how long this bliss will last, for soon enough there will come another bill their way. I was told this story by a colleague. And there are countless such stories that every one of us hears about, nearly every day. At nearly every level, below the extremely rich, life has been affected and in an ugly manner. Someone tells the story of an acquaintance who is now buying cheaper, poorer quality food. Another has moved houses to save money. Those who used small cars have moved to motorcycles. And the hardship of the most vulnerable can be judged from the stampede at nearly every distribution point for free atta, wheat flour. As another colleague remarked one day, everyone is on a short fuse, nearly every other conversation is a heated one, for people are very angry and frustrated. But all of this takes place in a land far away from the one our politicians and other stakeholders live in. The government is far too busy fearing and figuring out how to neutralize Imran Khan to have any time left for governance. A case in point is their lack of public reaction to the deaths in stampedes at atta distribution points. Instead, they seem busier with their Supreme Court strategy, defending the caretaker government's actions, and arguing against staggered elections. Their economic policy, on which tomes have been written already, consists of Ishaq Dar and the Prime Minister's regular promises of an IMF deal in the next few days. The world where people exist is distant from the one where our politics is carried out. On the other side, we have PTI. Khan wants elections, and for this, he keeps sending mixed signals about whether or not he wants to talk to the ruling alliance. And while he can and should be criticized for his intransigence, as the opposition, there is little one can expect from him regarding the economy. One can only remind the PTI of the role they played in getting the country to this point, by letting Kakat Taran heat up the economy, after getting rid of Hafiz Sheikh. The Supreme Court is in a mess and the judges appear to be caught in personal battles, busy writing notes, orders and judgments against each other. They're a fourth stakeholder, but it claims to be distant from dirty politics, a claim which is perhaps believed only in the realm of TV talk shows. Elsewhere the assumptions tend to be different. But then, the world where people exist is distant from the one where our politics is carried out. But in all of this, there are 2 issues. 1, that the IMF program is not being finalized and Pakistan is running out of time. And second, that once time runs out, this political status quo or stalemate will be difficult to sustain. There are essentially 4 players in this present mess: the people, PTI, the PDM and the establishment. At the moment, there is no indication that any one of them is willing to show any flexibility in their stand, as in, little at present is going to change the position of these 4 players. But if there is a default or a further worsening of the economic situation, with shortages including that of energy, these positions, or some of them, will weaken. The people will be weaker, but this will not necessarily change their voting decisions in such a way that the possible victories and defeats visible right now will be reversed. Perhaps, an angrier populace will be disillusioned with the PTI, but will it transform into support for any of the ruling parties? Will it make the PTI more amenable to a compromise, whatever that looks like, or will the ruling alliance become more amenable to an election? Or will it force the establishment to change its mind? However, if Sri Lanka is any guide, those in power will be in a difficult position. The point here is that if the IMF program doesn't come through, default or a meltdown, call it what you will, is inevitable. And once it does, one or more of the stakeholders are bound to end up in weaker positions. And the contours of a future political arrangement will then begin to take shape, whether it is in the shape of elections, or something less constitutional as some are predicting. But this is not where the matter will end. A weaker economy will obviously then give more incentive to the international financial institutions to push for reforms on their terms,
because there is now growing impatience with Pakistan's inability to address the problems of its own economy. More serious still, imagine what the IFIs and the other lending partners will ask for then in exchange for an IMF program and assistance. And this question is not asked to hint at some of those darker implications that the finance ministry these days is fond of alluding to, but simply to say that the restructuring, such as privatization, will take place at a pace and terms not very palatable. Just consider a recent New York Times piece on how the change in policy of countries such as Saudi Arabia is impacting Egypt, which like Pakistan is used to bailouts. It provides a window into what the future may look like for us. The writer is a journalist. Published in Dawn, April 4, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. 4 अफराद पर मुश्तमिल एक फैमिली ने इस साल के शुरू में 2 महीने अंधेरे में इस छोटे से हिस्से में गुजारे जो उन्होंने किराए पर लिया था। इस्लामाबाद में एक शौहर, बीवी और 2 बच्चों ने ये 2 महीने बिजली के बगैर गुजारे क्योंकि उनका बिल इतना ज्यादा था कि वो इसे अदा करने की इस्तिताअत नहीं रखते थे, लिहाजा वो बगैर किसी बिजली के खेती करते रहे। इसके बाद पड़ोसी उनकी मदद करने के लिए पैसे जमा करने और बिल अदा करने के लिए इकट्ठे हुए। कोई सिर्फ ये सोच सकता है कि ये नेमत कब तक कायम रहेगी, क्योंकि जल्द ही उनके रास्ते में एक और बिल आएगा। मुझे ये कहानी एक साथी ने सुनाई, और ऐसी बेशुमार कहानियां हैं जिनके बारे में हम में से हर कोई तकरीबन हर रोज सुनता है। तकरीबन हर सतह पर, इंतहाई अमीर ओहे से नीचे, जिंदगी मुतासिर हुई है और बदसूरत अंदाज में। कोई एक जाने वाले की कहानी सुनाता है जो अब सस्ता, नाकिस मेयार का खाना खरीद रहा है। दूसरे ने पैसे बचाने के लिए घरों को मुंतकिल कर दिया है। जो लोग छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करते थे वो मोटरसाइकिलों की तरफ चले गए हैं। और सबसे ज्यादा कमजोर लोगों की मुश्किलात का अंदाजा मुफ्त आटे, गंदम का आटा के लिए तकरीबन हर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर भगदड़ से लगाया जा सकता है। जैसा कि एक और साथी ने एक दिन तबसरा किया, हर कोई एक मुख्तसर फ्यूज पर है। तकरीबन हर दूसरी बातचीत गर्मा गर्म होती है क्योंकि लोग बहुत गुस्से और मायूस होते हैं। लेकिन यह सब कुछ एक ऐसे मुल्क में होता है जहां हमारे सियासतदान और दीगर स्टेक होल्डर्स रहते हैं। हुकूमत इस खौफ में बहुत ज्यादा मसरूफ है कि इमरान खान को किस तरह बेअसर किया जाए ताकि हुक्मरानी के लिए कोई वक्त बाकी रह जाए। इसकी एक मिसाल आटे की तकसीम के मकामात पर भगदड़ में होने वाली अमवात पर उनका अवामी रद्दअमल का फुकदान है। इसके बजाय वो सुप्रीम कोर्ट की हिकमत अमली, निगरान हुकूमत के इक़दामात का दिफा करने और मरहलावार इंतखाबात के खिलाफ दलाइल देने में मसरूफ नजर आते हैं। उनकी माशी पॉलिसी, जिस पर पहले ही टूम्स लिखे जा चुके हैं, इसहाक डार और वजीर आजम के अगले चंद दिनों में IMF मुआहदे के बाकायदा वादों पर मुश्तमिल है। वो दुनिया जहां लोग मौजूद हैं वो इस दुनिया से बहुत दूर है जहां हमारी सियासत की जाती है। दूसरी तरफ हमारे पास PTI है। खान इंतखाबात चाहते हैं और उसके लिए वो मिले जले इशारे भेजते रहते हैं कि आया वो हुक्मरान इत्तेहाद से बात करना चाहते हैं या नहीं। और अगरचे अपोजिशन की हैसियत से उनकी हिट धर्मी की वजह से उन पर तनकीद की जा सकती है और होनी चाहिए, लेकिन मईशत के हवाले से उनसे बहुत कम तवक्को की जा सकती है। PTI को सिर्फ इस किरदार की याद दिलाई जा सकती है जो उन्होंने हफीज शेख से छुटकारा पाने के बाद शौकत तरीन को मईशत को गर्म करने की इजाजत देकर मुल्क को इस मकाम तक पहुंचाने में अदा किया था। सुप्रीम कोर्ट बदनज़मी का शिकार है और जज एक दूसरे के खिलाफ नोट, अहकामात और फैसले लिखने में मसरूफ नजर आते हैं। एक चौथा स्टेक होल्डर है, लेकिन वो गंदी सियासत से दूर होने का दावा करता है, एक ऐसा दावा जिस पर शायद सिर्फ टीवी टॉक शोज के दायरे में यकीन किया जाता है। दूसरी जगहों पर मफरूज़े मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन फिर वो दुनिया जहां लोग मौजूद हैं इस दुनिया से बहुत दूर है जहां हमारी सियासत की जाती है। लेकिन इस सब में 2 मसाइल हैं। एक ये कि IMF प्रोग्राम को हतमी शक्ल नहीं दी जा रही और पाकिस्तान के पास वक्त खत्म हो रहा है, और दूसरा ये कि एक बार जब वक्त खत्म हो जाएगा तो इस सियासी सूरत हाल तातुल को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा।
मौजूदा सूरत हाल में बुनियादी तौर पर 4 खिलाड़ी हैं: अवाम, पीटीआई, पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट। फिलहाल इस बात का कोई इशारा नहीं है कि उनमें से कोई भी अपने मौक़िफ़ में कोई लचक दिखाने के लिए तैयार है, जैसा कि फिलहाल उन 4 खिलाड़ियों की पोजीशन को तब्दील करने वाला बहुत कम है। लेकिन अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है या तवानाई समेत माशी सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है तवानाई की क़िल्लत के साथ, तो ये पोजीशनें इनमें से कुछ कमज़ोर हो जाएंगी। लोग कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इससे उनके वोटिंग के फ़ैसलों में इस तरह तब्दीली आए कि इस वक्त नज़र आने वाली मुमकिना फतूहात और शिकस्तों को पलट दिया जाए। हो सकता है कि एक मुश्तइल अवाम पीटीआई से मायूस हो जाएं, लेकिन क्या ये हुक्मरान जमातों में से किसी की हिमायत में तब्दील हो जाएगी? क्या इससे पीटीआई समझौते के लिए ज़्यादा अहल हो जाएगी? जो भी नज़र आए, हुक्मरान इत्तेहाद इंतखाबात के लिए ज़्यादा मौजू हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट को अपना ज़हन तब्दील करने पर मजबूर करेगा। ताहम अगर श्रीलंका कोई रहनुमा है तो इक़्तिदार में मौजूद लोग मुश्किल सूरत हाल में होंगे। यहाँ बात यह है कि अगर IMF का प्रोग्राम कामयाब नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट गिरावट नागुज़ीर है, और एक बार ऐसा होने के बाद एकाएक से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स कमज़ोर पोजीशनों में पहुँच जाएंगे, और उसके बाद मुस्तक़बिल के सियासी इंतज़ामात के खदोखाल शक्ल इख्तियार करना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो इंतखाबात की शक्ल में हो या कुछ कम आईनी जैसा कि कुछ लोग पेश गोई कर रहे हैं। लेकिन ये वो जगह नहीं है जहां मामला ख़त्म हो जाएगा। एक कमज़ोर मईशत यकीनी तौर पर बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों को अपनी शराइत पर इस्लाहात पर ज़ोर देने के लिए मज़ीद तरग़ीब देगी, क्योंकि अब पाकिस्तान की अपनी मईशत के मसाइल को हल करने में नाकामी पर बेसब्री बढ़ रही है। इससे भी ज़्यादा संजीदा तसव्वुर करें कि IFI और दीगर कर्ज देने वाले शराकतदार IMF प्रोग्राम और इमदाद के बदले क्या मांगेंगे, और ये सवाल उनमें से कुछ गहरे मुज़मरात की तरफ इशारा करने के लिए नहीं पूछा गया है जिनकी तरफ वज़ारत ख़ज़ाना इन दिनों इशारा करने का शौक़ रखती है, बल्कि सिर्फ ये कहना है कि निजकारी जैसी तंजीम नो इस रफ्तार से होगी और शराइत बहुत ज़्यादा मौजू नहीं होंगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक हालिया मज़मून पर गौर करें कि सऊदी अरब जैसे ममालिक की पॉलिसी में तब्दीली मिस्र पर किस तरह असरअंदाज हो रही है, जो पाकिस्तान की तरह बेल आउट का आदी है। ये एक खिड़की फराहम करता है कि मुस्तक़बिल हमारे लिए कैसा नज़र आ सकता है। मज़मून निगार एक सहाफ़ी हैं। अख़ज़ शदा बतारीख़ 4 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.